Okay. So yesterday we saw T filter columns, right? In the last session. Am I right? Yes, sir. Okay. So I'll be creating one more job now. T file properties. So today we'll see one more new component. Few more new components. The first one is T file properties component. Let's see what are the properties of this component we have. Once I double click under component tab, I can see these many properties it is having. Let's see edit schema. So as it is having these built-in columns, we need not to create anything. ये built in ही ये सब कुछ दे रहा है columns. Absolute path, directory name, base name, mode of string, size, m time when it is got created, m time in the string format. What exactly this is? This is the property of the file. This is the property of the file. जिस किसी भी फाइल का नाम हम भेजेंगे इस कंपोनेंट को, ये क्या करेगा, उसकी कंप्लीट प्रॉपर्टीज़ वो हमें रिटर्न करेगा. वी कैन यूज़ दैट दोज प्रॉपर्टीज़ फॉर फर्दर यूज़ इन आर जॉब. जहाँ कहीं पे भी हमें फ़ाइल का एग्जैक्ट पाथ लगेगा, डायरेक्टरी नेम लगेगा या फिर फाइल नेम लगेगा, साइज़ लगेगा, creation time लगेगा. At that time what we can do, we can use this component to explore the properties of it, right? So let's take tlog row. Let me take it as table view. Let me connect t file properties, connect it to tlog row, sync columns. Okay, for which file you wanted to get the details. Let me go here, इनपुट फाइल्स. लेट्स से emp1 का मुझे डिटेल लेना है. ओके ओके, व्हाट डिटेल इट कैन गिव अस. लेट्स सी. गो टू रन टैब, क्लियर एंड रन. देखते हैं क्या डिटेल्स हमें मिलता है, राइट. सो फर्स्ट इज एब्सोल्यूट पाथ. इस एब्सोल्यूट पाथ में क्या रहेगा, फाइल नेम, कंप्लीट पाथ ऑफ योर फाइल, right, along with your file name. Directory name, the second column, यहाँ पे फाइल नेम नहीं रहेगा, कंप्लीट डायरेक्टरी जहाँ पे ये फाइल प्लेस्ड है. बेस नेम इज अ एग्जैक्ट फाइल नेम व्हाट यू हैव along with the extension .txt, .zip, whatever. Okay, mode of this file, this is mode of string, mode underscore string. मतलब क्या है, what are the options we get with this file, what's the mode of this file, रीड, राइट, एग्जीक्यूट, क्या क्या रूल्स हमें यहाँ पर ओपन मिलेंगे इस फाइल के साथ. रीड एंड राइट, यू कैन मेक चेंजेस इन टू दिस फाइल, यू कैन रीड द फाइल एज वेल. रीड एंड राइट बोथ आर ओपन हियर. साइज ऑफ द फाइल is 50 by 59. It is byte, it is in the byte. Okay, m time which is just a numerical value. m time in the string, यहाँ पे आपको उसका एग्जैक्ट स्ट्रिंग मिलेगा, राइट. दिस इज द एग्जैक्ट डेट एंड टाइम along with the proper time zone here, right, जो भी सिस्टम टाइम जोन है. ओके, व्हेन यू रन इट ऑन दी सर्वर का जो भी टाइम जोन है वो हमें जैसे कि वैसे यहाँ पे मिलेगा. ओके, सो दिस इज़ हाउ वी कैन गेट दी प्रॉपर्टीज़ ऑफ द फाइल. क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, पाथ, डायरेक्टरी, फाइल का नाम, रीड राइट मोड, साइज,
m time and m time string. So these are the details we can get. इससे हमें क्या क्या हेल्प मिलेगा? वी कैन गेट दी क्रिएशन टाइम, जब फाइल कब क्रिएट हुआ है, उसका साइज़ कितना है, फाइल का नाम क्या है, फाइल का डायरेक्टरी पाथ क्या है, एब्सोल्यूट पाथ क्या है, ये सारी डिटेल्स हमें मिलेंगी। एक्चुअल में उसमें रीड राइट ऑप्शंस है या नहीं, ये सारी चीज़ें हम लोग चेक कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस कंपोनेंट। ओके, सिंपल यूज़। Calculate the MD hash here. Once you check this, you will get one more column here into list of all the columns. इससे क्या होगा? फाइल जब भी क्रिएट होता है उसका एक MD5 हैश कोड जनरेट होता है. If you have a file on your local, or if you have a file on one system and you wanted to compare it against the file which is present in any other directory or any other server, दोनों फाइल को कंपेयर करना है. एट दैट टाइम व्हाट यू कैन डू, यू कैन यूज़ दिस MD5 हैश. ये अगर हैश मैच हो रहा है दोनों फाइल का, इट मीन्स बोथ द फाइल्स आर सेम. ओके, लेट्स गो टू रन टैब, clear and run. Let's see how the hash looks like. This is the hash code. Okay, alphanumeric hash code is being generated. Okay, so this is to check the files present on server and local, or from the two different server. तो हमें चेक करना है कि दोनों फाइल सेम है या नहीं. That you can check it with MD5 function. Okay, present in the t file properties MD5. This option you can check to validate the files. Okay, next component, t file touch. T file touch. This component is equivalent to touch command of Unix or Linux operating system. touch command होता है Linux और Unix operating system में, वो वैसे ही सेम एग्जैक्टली काम करता है. हाउ? इफ़ यू पास एनी फाइल नेम along with the path or directory, the same file name, it will create the file on the desired location. Okay, let's see. Let me give any path here. Okay, ये पाथ मैंने दिया, ठीक है. यहाँ पे आई वॉन्ट टू बी क्रिएटेड sample.txt फाइल क्रिएट करना है. इनपुट सोर्सेस के अंदर मुझे sample.txt फाइल क्रिएट करना है. लेट्स गो टू रन टैब, क्लियर एंड रन. Let's check whether the file is being created or not. See, the touch command in Linux or Unix will create a 0 byte file, मतलब empty file generate करता है. Similarly यहाँ पे touch t file touch component is used to create the empty file there. Okay, one more option along with this component has given create directory if does not exist. तो मैं क्या करता हूँ, instead of resources underscore 1 करता हूँ यहाँ पे. this directory is not present, right? d:/input resource sources underscore 1 slash sample.txt, ये directory तो available नहीं है. it should create a new directory under d drive. d drive में input sources underscore 1 ऐसा कोई भी folder नहीं है, right? so let me run this job. so this option, create directory if does not exist. while creating a file, अगर directory भी available नहीं है, ये folder भी available नहीं है, वो भी create करेगा by checking this. clear and run. let's check whether the directory is created. yeah, here it is. इसके अंदर sample.txt, right? what if I don't check this option and I don't have that directory?
लेट्स से _2, ये डायरेक्टरी तो अवेलेबल नहीं है. लेट मी सेव दिस, गो टू रन टैब, क्लियर एंड रन. So it's thrown an error. What is saying? Exception in component t file touch job name demo2. System cannot find the path which is specified. Which path? This path. Because it doesn't find this path. D drive में input underscore sources underscore 2 ऐसा कोई भी path available नहीं है, ऐसा folder available नहीं है, and it cannot create the sample.txt, right? So to overcome from this problem, अगर directory भी available नहीं है, path available नहीं है, folder available नहीं है, you can check this option and create directory if does not exist. What it will do? Clear and run. So it will create the folder if does not exist. Let's check. Input 2 dot input, sorry, resources underscore 2, इसके अंदर sample.txt, right? So this is the component used to create the 0 byte file. It means empty file on the given location. T file copy. Let's check. T file copy. So now here T file copy, as name suggests, file को copy करने के लिए, right? A given file we can copy from one location to different location. Okay, let me go to the directory here. Input sources, we have these many files, right? Let me open one, right? emp.txt. I wanted to copy this into some other location. Input sources, sorry, under D drive I wanted to copy this file under input sources 1. Selected the folder. Input sources से emp.txt input sources underscore 1 के अंदर जाना चाहिए. That is what my requirement. Copy a directory if does not exist. It means अगर directory completely copy करना है, that is also possible by checking this option. As of now, just check with these many options only. Input sources से input sources 1 में, right? Here you can see the file is being copied, right? You can copy the directory as well, the entire directory. See, when I check this, what it is saying, copy a directory. Copy a directory, let's say input sources 1. Select folder, copy it into input sources 2. 1 से ये complete directory कहाँ पे copy होना चाहिए? Input sources 2 में. Okay, let me go to run tab, clear and run. What is our requirement? Copy from sources 1 into sources 2. Let's check sources 2. See, sources 2 having this input, sources 1 इसके अंदर same files, right? Copy one file or a complete directory, that is also possible. Fail on error, अगर error कहीं पे आता है तो fail कर देता है इसको, ये option. Okay, this component is used to copy the file from one location to another location. T file delete. T file delete. This component is used to delete the specific file from the location. Let's say
I wanted to delete it from input sources. emp नाम का या फिर sample नाम का ये फाइल मुझे डिलीट करना है. ओके. फेल ऑन एरर, अगर एरर आता है तो फेल होना चाहिए. डिलीट एंटायर फोल्डर, आई डोंट वांट इट टू डिलीट. डिलीट फाइल और फोल्डर, आई डोंट वांट इट टू डिलीट फोल्डर. I simply wanted to delete the file. Okay. Note current status including file or path deleted. No file or path deleted. Just the message here. Okay. Let's go to run tab. Given file should be deleted. What file it is? Sample.txt from input sources. Okay. Job is not completed. Input sources check करना है हमें. Sample.txt got deleted from here. You can pass any file which you wanted to delete. Okay. Delete folder will delete the entire folder from the given location. Clear and run. Now it has thrown an error. What it is saying? This path is not there, right? So I didn't change the path. Input sources. Let me select this folder. Input sources folder along with the files it should delete, right? D ड्राइव के अंदर इनपुट सोर्सेस फोल्डर है, उसको मुझे डिलीट करना है. क्लियर एंड रन. D:/ cannot be deleted. Any particular reason? Now check. It has deleted input sources _1. Input sources _1 got deleted. Now let's try with input sources 2. Input sources 2. Okay. Let me go to run tab, clear and error. Input sources 2 also got deleted. Now I wanted to delete the folder input sources only, not _2. Okay, let me run this. It will throw an error if the desired folder is empty, cannot be deleted. Let me create one more folder here. Right click, new, create a folder.
new underscore folder. Okay, choose a path, new folder, click on OK, go to run tab, clear and run. Now it got deleted. No particular reason behind deleting. Did you see any particular reason why it is not deleting? सर फाइल ऑन एरर में शायद बात अलग है। फाइल ऑन एरर है, उसमें शायद है ना बात अलग है ना, सैंपल टीएक्सटी उसमें है, अगर देखोगे फाइल ऑन एरर। Okay. But it is not deleting, no? Input sources is not getting deleted. ये तो एरर आएगा अगर कुछ दिक्कत रहता है तो, राइट? Okay, let's check whether the copy will be deleted or not. Go to run tab, select folder, run tab, clear and run. The copy will be got deleted. Underscore 1. This is underscore 2. This is the reason. सर टेक्स्ट फाइल ओपन है क्या? Yes, this is the reason. This is what it is not deleting, right? So now we can delete the same file. Now we can delete this. The file from yesterday, I missed to close the file. I just opened it. I kept it opened. So that's why it is not getting deleted, right? No issues. So keep this in mind. ऐसा होता है तो वो डिलीट नहीं करेगा, ठीक है? So now next component is
T Oracle input. So for that we need Oracle database, right? For that we need Oracle database to be installed. So Oracle setup, I already kept it here. You can download this from softwares folder. This is the setup file we have. इसको आपको डाउनलोड करना है, अनजिप करना है. इसके अंदर एक सेटअप फाइल है. दिस यू नीड टू सेटअप. ओके, तो I don't have anything installed as Oracle, so I'll be showing you how to install Oracle. मैंने डाउनलोड करके रख लिया है, उसको मैं अभी इंस्टॉल करने वाला हूँ, राइट? Oracle setup file you can download it from shared location in the softwares folder. अभी Oracle को इंस्टॉल करेंगे हम लोग, ठीक है? डबल क्लिक ऑन इट. It will start the installation process. The first window you cannot see that onto the screen, but it will ask you, do you want to allow this app to make changes into your device? Say yes. Okay, after that you can see the screen preparing to install Oracle database 11G Express Edition. ये मैं आपको इंस्टॉल करके या फिर ये इन्वॉल्व कर रहा हूँ Oracle because I wanted to cover the Oracle input component and the further sessions will be on, I mean as a database हम लोग Oracle यूज़ करेंगे, and at the end we can use this one PostgreSQL as well. Okay, now after that you simply need to click on next. Here onto this window you have to click on I accept terms and license agreement. इसको चेक करना है, accept को. Click on next. Here you don't need to make any changes. कुछ भी चेंज नहीं करना है. C ड्राइव पे डाउनलोड इंस्टॉल होने दो as it is. Click on next. This is a very simple process of installing. ये उसी को आएगा जिसके मशीन में पहले Oracle इंस्टॉल्ड था, अदरवाइज नहीं आएगा. Even if you get say yes. यहाँ पे सिर्फ हमें पासवर्ड एंटर करना है, नथिंग अपार्ट फ्रॉम दैट. आपका डेटाबेस का यूज़र नेम है सिस्टम, आपको पासवर्ड सिर्फ एंटर करना है. मैं एंटर कर रहा हूँ 123. कंफर्म पासवर्ड में 123. दोनों भी टेक्स्ट बॉक्सेस में 123 मैंने ऐड कर लिया है. आई विल बी क्लिकिंग ऑन नेक्स्ट. दीज आर द डिटेल्स ऑफ Oracle इंस्टॉलेशन, जैसे कि डेस्टिनेशन फोल्डर कहाँ पे इंस्टॉल होना है, Oracle होम डायरेक्टरी सर्वर कहाँ पे इंस्टॉल होगा Oracle का, एंड पोर्ट नंबर. बाय डिफ़ॉल्ट Oracle's पोर्ट नंबर विल बी इनेबल्ड ऑन 1521. HTTP लिसनर पोर्ट बाय डिफ़ॉल्ट 8080. ये कुछ भी हमें चेंज नहीं करना है, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन. ये सारी डिटेल्स पे आपका Oracle सर्वर विल बी गेटिंग इनेबल्ड. क्लिक ऑन इंस्टॉल. The installation wizard started for installation of Oracle 11G Express Edition. Express Edition मतलब आपको ओपन सोर्स है ये, for practice purpose. Express Edition. You no need to go to Oracle site to download this Oracle setup. I have kept it into the softwares folder. आप वहाँ पे जाओगे तो आपको एक तो वर्जन नहीं मिलेगा. Oracle साइट पे जाओगे तो अगर चाहोगे तो आपको साइन अप करना पड़ेगा. दैट इज़ अगेन एन हेक्टिक थिंग फॉर यू. वंस डन वी कैन स्टार्ट यूजिंग दिस Oracle डेटाबेस थ्रू Talend. Talend से हम लोग Oracle डेटाबेस का डेटा रीड करेंगे, या फिर Talend से हम लोग डेटा Oracle में लोड कर सकते हैं. ओके, creating and starting the services for Oracle database 11G Express Edition. This process will be handled by your Oracle or database administrator. आप जिस भी प्रोजेक्ट में जाओगे ये इंस्टॉलेशन का काम आपका नहीं होता है.
So database will be installed somewhere onto the cloud or onto the server. इन हाउस सर्वर है तो इन हाउस सर्वर में, या फिर क्लाउड पे है तो क्लाउड पे. अभी मोस्टली कंपनीज ऑर्गेनाइजेशंस क्या फॉलो कर रहे हैं, और सॉरी क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशंस या फिर डेटाबेसेस यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि AWS का रेडशिफ्ट है, स्नोफ्लेक करके और एक है. ऐसे सारे डेटाबेसेस वो यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, इट इज़ कॉन्फ़िगरिंग द डेटाबेस. लेट्स वेट फॉर सम टाइम, डेटाबेस कॉन्फ़िगर हो जाएगा. So after configuring this one, we need to have SQL developer. ये भी आपको डाउनलोड करके रखना है. दिस इज़ जस्ट अ टूल टू एक्सेस ओरेकल. ठीक है, एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है SQL developer through which we can access the Oracle database. We have to wait until the database is getting configured. ये setup complete हो जाता है, then we can start using it. See whether it is completed or not. Still database configuration is going on. So meanwhile I'll show you, once you download which file, the SQL developer, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है. जब आपका इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया, आप दोनों एक साथ में ही भी डाउनलोड करके रख सकते हो. These both are zip files. You need to unzip them before installation. SQL developer को इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं है. You just need to download and unzip it. Once you unzip it, you will get one folder from it. See this one. Under this folder, you will be having one application file. Oracle installation is got completed. Simply click on finish. Oracle installation complete हो गया है. How you can understand Oracle install हो गया है? In the control panel you can see. Let me refresh it. See, Oracle database just now installed 12/12/24. Okay, Oracle database is got installed. आपने SQL डेवलपर का जिप फाइल डाउनलोड कर लिया, उसको अनजिप करना है और एक सेफ लोकेशन पे आपको कॉपी करके रखना है फोल्डर को. दिस फाइल यू कैन डायरेक्टली ड्रैग इट ऑन टू दी टास्क बार. सो नेक्स्ट टाइम आप उसको ईजीली ओपन कर सकते हो, राइट. एंड डोंट डिलीट दीज फाइल्स ऑफ SQL developer. These are important to run the SQL developer. Okay. Okay, so let me start this SQL developer application.
So once SQL developer started, we can configure Oracle into SQL developer. SQL developer is just a tool आपको Oracle को access करने के लिए. Okay. Let me delete this an existing connection and I'll show you how to create a new connection. आप जब भी ओपन करोगे SQL developer, this will looks like this. From this button you can create a new connection, else Oracle connections पे राइट क्लिक करके भी आप नया कनेक्शन बना सकते हो. ओके, विच एवर यू प्रेफर. ओके, Oracle connections या फिर here it is. Okay, once you click there, you need to give the connection name here to which you are connecting. Let's say I'll be connecting to dev underscore Oracle. Okay, dev underscore Oracle. ये मेरा जस्ट कनेक्शन नेम है, इसका रिलेशन कुछ भी नहीं है यहाँ पे. ठीक है, जब आपको किसी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट की कनेक्शन डिटेल्स मिलेंगे आपकी कंपनी में जब आप वर्क स्टार्ट करोगे, सो अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू क्रिएट द कनेक्शन एंड कनेक्शन नेम्स. लेट्स से डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का कनेक्शन डिटेल्स एक पेज पे आपको दिया है, पेज पे मतलब एक वर्ड डॉक्यूमेंट में दिया है, तो वहाँ पे डेव कनेक्शन करके दिया है, डेव Oracle, एंड यूज़र नेम दिया है लेट्स से सिस्टम. ओके, पासवर्ड दिया है 123. हमने Oracle का पासवर्ड 123 दिया है, Oracle का पासवर्ड सिस्टम है, राइट. ये दो चीज़ें हमने याद करके रखना है. आप भी 123 पासवर्ड दे दो जब Oracle इंस्टॉल कर रहे हो, सो इट विल बी ईजी फॉर यू टू रिमेंबर. ओके, फिर सो आफ्टर दैट क्लिक ऑन दिस check box to save the password, need not to remember for all the times, right. So अगर आप इसको चेक नहीं करते हो, जब भी आप कनेक्शन को कनेक्ट करने जाओगे तो इट विल आस्क यू फॉर अ पासवर्ड. सो व्हाट डिटेल्स वी हैव गिवन, नेम ऑफ द कनेक्शन, यूज़र नेम, पासवर्ड, सेव पासवर्ड, इसको हमने चेक कर लिया. होस्ट नेम इज़ अ लोकल होस्ट. एज ऑफ नाउ हमने Oracle को लोकल मशीन में इंस्टॉल किया है, राइट, इसलिए हम लोग उसको लोकल होस्ट करके होस्ट नेम दे रहे हैं. जब भी ये किसी सर्वर पे इंस्टॉल रहता है तो उस सर्वर का IP एड्रेस या फिर सर्वर का नेम वहाँ पे रहता है, राइट. पोर्ट नंबर, वट एवर पोर्ट ऑन विच द Oracle इज गॉट इंस्टॉल्ड, बाई डिफ़ॉल्ट 1521 होता है. एडमिनिस्ट्रेटर माइट चेंज व्हेन दे आर इंस्टॉलिंग इट, इट डिपेंड्स ऑन दैम. ओके, ये सारे डिटेल्स आपको एडमिनिस्ट्रेटर या फिर जब आपका यूज़र क्रिएट हो जाएगा किसी डेटाबेस के लिए, लेट्स से आपके प्रोजेक्ट में पोस्टग्रेस है या फिर रेडशिफ्ट है या फिर स्नोफ्लेक है, आपका यूज़र क्रिएट हो गया, यूज़र आपका लेट्स से ABS_123 ऐसा कुछ बन गया है. ठीक है, तो उस यूज़र के लिए वो लोग पासवर्ड जनरेट करके देते हैं एंड ये कनेक्शन डिटेल्स आपको सब देते हैं. होस्ट नेम, पोर्ट नंबर, SID है या सर्विस नेम है, जो भी डिटेल्स हैं वो सारे आपको दे देंगे और कौन से एप्लीकेशन से आपको लॉगिन करना है वो सब कुछ बता देंगे. एंड यू हैव टू गिव ऑल दीज डिटेल्स एंड यू हैव टू सेव दैट कनेक्शन क्रिएट करके आपको रख लेना है. वहाँ पे SQL डेवलपर ही एप्लीकेशन रहेगा ऐसा नहीं है, दूसरा कोई भी एप्लीकेशन हो सकता है. ठीक है, सो आई हैव गिवन ऑल द डिटेल्स. यहाँ पे तो मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया है, सिर्फ कनेक्शन नेम दिया है, यूज़र नेम, पासवर्ड, सेव पासवर्ड, लोकल होस्ट ऑलरेडी था, पोर्ट नंबर जैसे कि वैसे, SID XE. लेट टेस्ट द कनेक्शन. जब मैंने टेस्ट पे क्लिक किया, समथिंग रैन एंड हियर यू कैन सी स्टेटस ऑफ द कनेक्शन इज सक्सेस. टेस्ट कनेक्शन सक्सेस हो गया. सेव करता हूँ मैं इसको. आफ्टर क्लिकिंग ऑन सेव बटन, हियर ऑटोमेटिकली द कनेक्शन इज गॉट क्रिएटेड. Let me click on connect now. After connecting it, here you can observe after some time it will be get connected. See, यहाँ पे एक छोटा सा पिन दिख रहा है, it means it is got connected to the Oracle database. Now you can test whether the database is up and running or not. Okay, as Oracle में एक default table होता है, dummy table होता है, उसके ऊपर आप query कर सकते हो. Select star from
dual. So this is the default table given by Oracle. You can select this query and run here. See, it is running. अभी Oracle तो चल रहा है, ठीक है. Now I wanted to access this Oracle from where? From Talend. Okay, T Oracle input. I'll just today show you how we can use this. Very first time when you start using this component, it will ask you this component T Oracle input requires at least one external jar to be installed. Simply click on install. While doing this, your internet connection should be up and running. Fair? Click on install. Download all the modules. Click on I accept all. Okay, so till here follow all the process. Okay,